Hello students, welcome to BDS Learn classes. Dear students, today in this video I am going to teach you about soil and its type and use of soils. Okay, so let's be see that what are soil. Soil means मृदा, that is मिट्टी. Okay. तो बेटा आज के इस वीडियो में हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे कि सॉइल कैसे बनता है, सॉइल क्या होता है, सॉइल किसे कहते हैं, इसके टाइप क्या होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द सॉइल मीन्स एंड व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल. ओके, सो सॉइल. डियर स्टूडेंट्स, द अपर मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ए सॉइल. व्हाट? द अपर मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ए सॉइल. मीन्स पृथ्वी का सबसे ऊपरी उपजाऊ सतह मृदा कहलाता है. ओके, और इन अदर वर्ड यू आल्सो कैन से दैट सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस. ओके, मीन्स द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड एज सॉइल. Okay, dear students, soil is consist by withering of rocks. Okay, withering of rocks. चट्टानों के टूटने से बनता है, विखंडन से बनता है. ओके, बट हियर अ क्वेश्चन इज राइज दैट हाउ बिदरिंग टेक्स प्लेस. बिदरिंग कैसे होता है? ओके, सो द बिदरिंग इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ हीट, विद द हेल्प ऑफ हीट दैट इज टेम्परेचर. ओके, विंड, फॉल ऑफ वाटर एक्सेट्रा. ओके, नंबर वन हीट, ऊष्मा से. ओके, आपको पता होना चाहिए कि जब रॉक्स का टेम्परेचर इंक्रीज होकर बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, स्क्रैच आएगा और टूट के गिर जाएंगे. उसके बाद वो स्लोली बाय स्लोली फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होकर के सॉइल बना लेंगे. नेक्स्ट इज बाय विंड, हवा से. यू नो दैट व्हेन winds blow very high speed, they strike to the rocks and withering takes place. Okay, that is called as moldering, झरना. Okay, झर के गिरने लगते हैं. नेक्स्ट इज फॉल ऑफ वाटर, waterfall. You know that you often see that in fountains the water falls down at very high top of the rocks or mountains or peaks, and on falling they break down the rocks in fine particles. Okay, that is called sand, and after some time it form the soil. So overall you can say that the withering of rocks takes place with the help of heat, wind, fall of water, etc. Okay, next is soil profile. Okay, soil profile. Soil profile. Dear students, this soil profile is divided into following horizons. Okay, that is horizon A, horizon A, horizon A, horizon B, horizon C, and bedrock. This is a soil profile.
Okay. Horizon A. The uppermost part of the soil is called as horizon A. It is also called as a top soil. It is also called as top soil. Okay, it is also called as top soil. Okay, and it is very fertile because it is considered by sand particles and humus, so it is very fertile. Means overall you can say that the horizon A is fertile, which is called as top soil. So the farmer sows or cultivated their crops in horizon A because it is the uppermost or topmost part of the soil and called as top soil. Okay, next is horizon B. Horizon B is called as middle layer. Middle layer of the soil. It is constituted by rock particles and some humus particles. So overall you can say that horizon B is a lesser fertile than horizon A. Okay, because it is constituted by rock particles and some amount of the humus, so it is less fertile. तो बेटा हार्जन भी जो होता है वो हार्जन एक नीचे पाया जाता है और रॉक पार्टिकल और कुछ ह्यूमस से मिलकर बना होता है, जिसके कारण क्या होता है, कम फर्टाइल होता है, कम उपजाऊ होता है. और आई होप इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स, और ये फसलों के उगाने के लिए ठीक कम पड़ेगा. नेक्स्ट इज हार्जन सी. हार्जन सी इज द थर्ड लेयर of the soil profile, which is non-fertile and are consisted by rock and rock particles. Okay, it has no constituent of the humus, so it is very less fertile. We consider it is no fertile and not suitable for the cultivation of the crops. And the lowermost part of the soil is a bedrock. This is considered by only and only rock particles, only rocks. It is very harder. Okay, so they are the soil profiles, that is horizon A, horizon B, horizon C and bedrock. Horizon A is called as top soil, horizon B is called as middle layer, and horizon C is a third layer of the soil profile. Okay, next is type of soil. Dear students, the soil is classified especially in following three category. Okay, in three category. Number one, sandy soil. Types of soil. Types of soil, मृदा के प्रकार. Okay, it is following three types. How many types? Three types. Number one, sandy soil. Number two, loamy soil. And next is clay soil. Okay, so soil is classified in following three category. Number one, sandy soil. Number two, loamy soil. Number third, clay soil. Okay, different. Sandy soils have big amount of the bigger particles. It has the greater amount of the big particles. Has the greater amount of the big soil. Means the proportion of big soil is larger in quantity in sandy soil. Okay,
next is loamy soil. Loamy soil is consisted by sand, clay and it is consisted by sand, clay and अंदर पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल। तो बेटा क्या होता है, ये सैंड, क्ले और सॉइल के से पार्टिकल्स में बना होता है एंड इट इज यूजफुल फॉर द प्ले एन इम्पॉर्टेंट और इट प्रोड्यूसेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ द क्रॉप प्रोडक्ट्स बिकॉज इट इज वेरी फर्टाइल्स। नेक्स्ट इज क्ले सॉइल, इट इज कंसिस्टेड बाई big particles and clay particles in equal amount. So dear friends, this is the soil, its type, soil profile and their definitions. So I hope that all of you understood about the soil profile and their types. Dear friends, in my next video I will teach you about soil erosion, okay, and forestation and deforestation. So thank you, have a nice day.